सो हमारा प्रैक्टिकल वन है, हमको कहता है कि वी हैव टू स्टडी, बेसिकली स्टडी द एंड enlist the basic functions using C++, Python language. हम सी यूज करते हैं. आप बोलोगे पाइथन इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन. पाइथन इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन एक्चुअली, बट द प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट विद पाइथन इज जो हमारे प्रैक्टिकल्स है वो भी बेस्ड है सी के ऊपर, तो उनको इम्प्लीमेंट करना वहां पे is a different part, क्योंकि certain things are really not supported, so eventually you have to get back to C and C++. So that's the reason we go for C. Now ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको कुछ नई चीजें दिखाई देंगी. फर्स्ट थिंग इज conio.h एंड stdio.h तो होना है, बट उसके साथ और एक लाइन आ जाती है, दैट इज hash include graphics.h. यू नो hash include आगे जो हम लिखते हैं, दिस वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इन C++, दिस आर लाइब्रेरीज. सो यहाँ पर हम ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इंक्लूड करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, ग्राफिक्स लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं. अभी हम conio.h एंड stdio.h जो यूज करते हैं, it is supposed to support certain things. What things? printf, scanf. इसका definition कहाँ पर होता है? इसका definition होता है stdio and conio.h में. getch का definition कहाँ पे होता है? इसका definition होता है of course stdio.h का जो part है उसके अंदर. सो इन सारी चीजों की डेफिनेशंस कहीं ना कहीं पे उन लाइब्रेरीज के अंदर होती है एज सर्टन फॉर्म ऑफ फंक्शंस, एज सर्टन फॉर्म ऑफ फंक्शंस. सो यहाँ पर ग्राफिक्स के लिए भी हमको कुछ फंक्शंस है जो रिक्वायर्ड है, एंड दोस फंक्शंस दैट वी हैव सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एंड सी व्हाट दे आर. सो फर्स्ट यहाँ पर एज सून एज यू स्टार्ट द मेन मेथड इन सी, आप दो वेरिएबल्स तो डिक्लेयर करोगे. स्टैंडर्ड वेरिएबल्स है जीडी एंड जीएम. जीडी के लिए आप वैल्यू दोगे डिटेक्ट, क्यों दोगे आई विल टेल यू ऑल एवरीथिंग. बाद में एक दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इनिट ग्राफ. ओके, इट्स ये हमेशा शुरुआत में आता है और उसको कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा है, एड्रेस ऑफ जीडी, एड्रेस ऑफ जीएम, एंड इट लिंक दैट इज टू आवर टर्बो सी फोल्डर में बीजीआई करके जो फोल्डर है उसके लिए हम लिंक देने वाले हैं. सो दिस इज मैंडेटरी. दिस आर द टू लाइंस व्हिच विल बी एडेड मोर. एंड द लास्ट लाइन इफ यू सी आफ्टर गेट ch यहाँ पर है, क्लोज ग्राफ करके ये जो वैल्यू है वो ऐड की जाती है. सो क्लोज ग्राफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. व्हाई क्लोज ग्राफ? init stands for initialization of graph and close graph stands for closing of graph. So when you start the program, open the graph plus, open the graphics plus, और वहां पे आप जो भी ड्राइंग्स करना है उसके बाद आप कर लो, and at the end make sure once you are done basically you also close the graph. So these are certain mandatory statements which will be added. Now what does this statement means and how are we supposed to go about it, that I will tell you all shortly. So here I come. ये मैंने आपको शेयर किया है कि मुझे पता नहीं, बट ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फाइल है, दैट इज ये थोड़ा सा ब्लर ही है. ओके, इनिशियली ही मुझे जहां से मैंने डाउनलोड किया है, it's a little bit blur kind of a file, so please take note of this. Okay, this won't work. Okay, so this is the first part, this is my first document. ऐसे मैंने कुछ पिक्स है मेरे पास, लाइक इतने सारे, and they tell you all about all the inbuilt functions clearly mentioned. ये जो आपको बताने वाले हैं, those are all inbuilt functions are going to be told to you all. So inbuilt functions जो होंगे, this part basically, so inbuilt functions will be told to us. inbuilt functions तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. So ग्राफिक्स में हमारे पास बहुत सारे inbuilt functions हैं, and what does inbuilt functions are? आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आर्क बताया है, सेकेंड इनिट ग्राफ बताया है, बाद में इनिट ग्राफ का कंटिन्यूएशन है, क्लोज ग्राफ आ जाता है, लाइन, सेट कलर, सेट बैकग्राउंड कलर, इक्लिप्स, फ्लड फिल, out text xy, set text justify, circle, rectangle, set line, get max x, get max y. ये सारे फंक्शन
आपको बहुत काम आने वाले हैं कुछ देर में. So this is a set which I got somewhere, and ये आपको अगर नहीं दिया है तो I will be passing it to all you all. And this is a very important document जो आपको initial CG क्या है इसके बारे में clearly सब कुछ बता देता है. Okay, so first part मुझे आपको ये बताना है कि init draft क्या होता है. Now init draft basically stands for your part where it says it is supposed to initialize the graph system. It is supposed to initialize the graph system which is there. So it is mainly used for initialization of graph system. Okay, so यहाँ पे clearly mentioned है कि यहाँ पे it's supposed to initialize the graph system, and उसका declaration कुछ ऐसा है. To start the graphic system, you must first call the init graph. Init graph initializes the graphic system by loading the graphics the driver from the disk or validating the register driver, then putting the system into graphics mode. So basically graphics mode में अगर आपको काम करना है तो आपको ये init graph जो है यूज करना पड़ेगा. ओके, दिस इज मैंडेटरी. अगर आप ये स्टेटमेंट भूल जाते हो आपका कोई भी जो डायग्राम है वो लिख के वहां पे नहीं आएगा. सो दैट इज योर init graph. So that is how it's going to be. And then the next part is, okay, the next is basically यहाँ पर आप देखते हो that is nothing but this is the part that we have. So init draft का main point ये होता है कि it is responsible to set all the graphic settings. It is responsible to set all the graphic settings. Settings like your color, palette, current position, viewport, etc. ये सारा जो है वो init graph set करता है zero को. Okay, but you know the main part that I have to tell you all. मैंने आपको दो पार्ट बताए थे उसमें. That is हमारा जो ये प्रोग्राम है. Okay, the program that we have right here, इसमें gd detect and gm करके ये जो इंटीजर वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं और इन्हीं को हमने init graph ये जो फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर यूज किया है. उसका एड्रेस बेसिकली हम पास आउट कर रहे हैं और बाद में आगे एक लिंक दे रहे हैं. ओके, बाद में आगे एक लिंक दे रहे हैं. तो ये क्या है बेसिकली, दिस व्हाट दिस वैल्यूज आर. लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग. First argument that we have is nothing but graph driver, that stands for gd. Okay, that stands for gd. The integer that specifies the graphic driver to be used, you can give in graph driver a value using the constant of graphics drivers. हम gd equal to detect लिखते हैं. Okay, we write gd equal to detect. बेसिकली ये एक इंटीजर वैल्यू है जो इनबिल्ट दी गई है. हाउ व्हाट इट इज, यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास. वी से gd इक्वल टू डिटेक्ट. इफ ग्राफ ड्राइवर, if this particular statement, if graph driver is equal to detect, init graph sets graph mode to the highest resolution available for the detected driver. You can give the graph mode value using a constant of graphics modes enumeration type. Okay, remember one this. When we say graph driver equal to detect, detect का मतलब क्या होता है, जाके डिटेक्ट करो. अभी वो क्या डिटेक्ट करने वाला है, हमारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन. Okay, we use some graphic drivers. What are these graphic drivers? The main graphic driver is nothing but, आपने ये यूनिट नंबर 1 में भी देखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीन, जहां पे आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है. उसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. सो ग्राफ ड्राइवर ऑफ कोर्स हर चीज के लिए, कुछ हर डिवाइस के लिए कुछ स्क्रीन की साइज सेम नहीं होती है. आप अलग अलग मॉनिटर्स यूज करते हो, अलग अलग मॉनिटर्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा तो सेटअप नहीं कर सकते कि ये एक ही रिजोल्यूशन, आई डोंट केयर अबाउट द मॉनिटर, नो. ओके, सो उसके लिए सी ने भी एक स्पेशल फंक्शन दिया है ग्राफ ड्राइवर. व्हेन द वैल्यू इज सेट टू बी डिटेक्ट, डिटेक्ट करके जब भी उसको वैल्यू मिलती है तो इन दैट लाइब्रेरी विच आई टोल्ड graphics.h, वहां पर जब ये डिटेक्ट होता है कि ये डिटेक्ट करके वैल्यू दिए, मतलब क्या, he has to go and find out with the help of conio.h and stdio.h, which is the graphics driver.
उसका रेजोल्यूशन क्या है वो अपने आप फाइंड आउट करके लेके आएगा. He will detect the driver and get it. He will detect the driver and get it. And after that, after detecting the driver, the next part is the graph mode. Integer that specifies the initial graph mode. I told you all this, that graph driver is responsible to detect the device जो भी इंटीग्रेटेड डिवाइस है, जो भी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो डिटेक्ट करना जरूरी है. वो डिटेक्ट करके को लेके आएगा, बट हमको ग्राफ जो है वो चालू करना है, राइट. वी हैव टू इनिशियलाइज द ग्राफ, वी हैव टू ओपन दिस ग्राफ, यू हैव टू ओपन आर प्रोग्राम इनटू ग्राफिक्स मोड. मींस व्हाट? इनटू ग्राफ मोड, जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा इनिशियलाइजेशन ग्राफ क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज गोइंग टू बेसिकली, it is completely going to initialize the graphic system. It is completely going to initialize the graphic system. It's mentioned in our part that it is supposed to initialize the graphic system. So how does it do it? It does with the help of two variables that we have, and those two variables are nothing but your part. Okay, those two variables are nothing but the part which is there, that is your graph driver and graph mode are supposed to do it. Graph driver, with the help of graphics library, IO stream and stdio जो भी है वहां पर, it will go take the help and find out, it will go and detect the graphic drivers which is there, उसका जो resolution होगा वो find out करेगा. And then graph mode will set valid graphic drivers and graphic mode values. यहाँ पे clearly mention है graph mode. Okay, graph driver and graph mode must be set to valid graphic drivers, which is the job of graph driver, and graph mode values. So graph mode values क्या है? जो हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है, दैट इज द ग्राफ मोड वैल्यूज. वाई ग्राफिक्स मोड वैल्यूज? हमको ग्राफ चालू करना है, एक्चुअली ग्राफिक्स मोड में हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए, तो ग्राफिक्स मोड जो है वो इनिशियलाइज होना चाहिए. ग्राफिक मोड में कुछ वैल्यूज होने वाली है जो वो ग्राफिक मोड लेगा और अपने आप को उस साइज के हिसाब से इनिशियलाइज करेगा. मींस ही विल एडजस्ट हिमसेल्फ, he will start the graph, he will start the graphics mode in that particular size, he will start that particular in that particular values in that particular size basically. So it's basically like this, that आपकी already screen है. Normal जो situation होता है वहां पे हमको ग्राफिक्स मोड की जरूरत नहीं पड़ती है या ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है से. बट जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाने होते हैं सी में, तो ग्राफ की जरूरत पड़ती है. अब इस ग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए? इट शुड मैच विद योर स्क्रीन साइज. सो ग्राफिक ड्राइवर को, मतलब अभी स्क्रीन साइज से पता चलेगी. ऑफकोर्स स्क्रीन एक मॉनिटर है, तो मॉनिटर किसी कंपनी ने बनाया है, तो उसका साइज क्या है वो पता करना जरूरी है. तो कौन बताएगा? ऑफकोर्स मॉनिटर का जो ड्राइवर है वो बताएगा. तो graphic driver goes and find out the monitor's drivers, take the information from him, and then use that screen resolution information to your graphics mode. Graphic mode takes that information and उस साइज के हिसाब से वो ग्राफ अपना तैयार कर देता है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस. ग्राफ ड्राइवर इज फॉर मॉनिटर्स ड्राइवर को गेट द इंफॉर्मेशन, एंड ग्राफ मोड के बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. तो ग्राफ मोड हमेशा आउटपुट स्क्रीन पे होना जरूरी है. इट इज काइंड ऑफ अ लेयर ऑन आउटपुट स्क्रीन. वहां पे ग्राफ मोड ओपन हो जाता है और उसके ऊपर चीजें ड्रॉ होनी चालू होती है. तो ग्राफ मोड की साइज जो है वो आपको ग्राफिक ड्राइवर बताता है. स्क्रीन रेजोल्यूशन इज नथिंग बट द ग्राफ मोड साइज. नाउ ओके, सो दैट इज, आई होप इट्स अंडरस्टूड. अब बोला जी मैम ये ग्राफ मोड की क्या जरूरत है? सिंपल है. आप ड्राइंग कैसे करते हो, आपको ऐसा, मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट वगैरह हो तो आपको पता होगा. आप पहले क्लियर पेपर लोगे, स्पेशल पेपर, ड्राइंग पेपर. हमेशा हमको स्कूल में भी सिखाया गया है, ड्राइंग बुक हमेशा अलग रहता है. या फिर अगर आर्टिस्ट वगैरह हो तो आपको एक कैनवास लोगे स्पेशल ऐसा, एंड बाद में उसके ऊपर ड्राइंग करोगे.
ये ग्राफिक्स, यहाँ पर हम उसको ग्राफिक मोड्स कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जाएंगे आप तो वहां पे उसको कैनवास बुलाया जाता है। स्पेशली आई आई नो दिस इज कॉल्ड इन एंड्रॉयड। ओके, एंड्रॉयड में हम इसको कैनवास बुलाते हैं। सो द नेम्स कीप ऑन चेंजिंग, but and yeah, the relevancy has increased now with how the drawings happen, but that's the names basically. So it's like a canvas basically. On the canvas you start drawing things, वैसे ही इस canvas के ऊपर हम draw करेंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जस्ट आपको आपका सिंटेक्स ध्यान रखना है। दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, वन इज जीडी विच स्टैंड्स फॉर ग्राफिक ड्राइवर, वन इज जीएम विच स्टैंड्स फॉर ग्राफिक मोड। वहां पे जीडी को हम डिटेक्ट दे देंगे क्योंकि उसको जाके वैल्यूज को डिटेक्ट करना है, टेकिंग हेल्प ऑफ वॉट एवर दोस लाइब्रेरीज है, ग्राफिक लाइब्रेरीज एंड सो ऑन। एंड फिर उसका एड्रेस जो है वो इनिशियलाइजेशन इनिट ग्राफ में हम पास करते हैं। क्यों पास करना है? ऑफ कोर्स इनिट ग्राफ में पास करना है क्योंकि इनिट ग्राफ को ये वैल्यूज लेनी है। ओके, उसको पहले स्क्रीन रेजोल्यूशन लेना है, फिर उस स्क्रीन रेजोल्यूशन जीएम को देके, ग्राफिक्स मोड को देके ही हैज टू create that, initialize the graph. So initializing the graph के लिए values की जरूरत है, वो gd और gm के पास होती है। So that's the reason gd and gm का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पास किया गया है। So gd will go and detect and gm will take those values and then initialize the graph from this particular point. ओके, विद द हेल्प ऑफ इनिट ग्राफ मेथड। इसका जो डेफिनेशन है वो आपको ग्राफिक्स डॉट एच में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एक छोटी सी लिंक आती है, जिस यहाँ पे मैंने बीजेटी लिखा है, इट्स एक्चुअली बीजीआई, और इसका सिंटेक्स जो है वो चेंज होता है। आई विल टेल यू ऑल क्या है और ऐसा क्यों है, सो वो हम देखेंगे। अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी कॉमन, हमारा टीसी स्टैंड्स फॉर टर्बो सी, बट आजकल जैसे कि मैंने बताया विंडोज 7 और विंडोज 10 के अंदर ये टीसी नहीं दिखाई देता है, टर्बो C3 दिखाई देता है। तो यहाँ पे आएगा आपका टर्बो C3, और हर टर्बो C3 के अंदर एक बीजीआई करके लाइब्रेरी होती है। नाउ दिस बीजीआई लाइब्रेरी इज नथिंग बट योर ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ओके, सो यहाँ पे आपका सारे ये जो मैंने फंक्शंस बताया ना, इनिट ग्राफ, क्लोज ग्राफ, ये आर्क, ये जो सारे इनबिल्ट फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो डेफिनेशन है वो डीएलएल या डीएलएल फाइल में या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है उसके जरिए वहां पे अंदर उसके रखा गया है। सो वील बी यूजिंग दोस पार्ट मेनली एंड विल बी सो पाथ देने जरूरत है। सो दैट इज द ग्राफिक मोड एंड व्हाई वी रिक्वायर दैट। सो वो एक पार्ट है and we'll be using that init graph. And as we are using init graph, after that we need to use close graph। हम गेट सी एच में भी करते हैं, जो चालू करना है वो हमको ही बंद करना है। तो क्लोज ग्राफ शट्स डाउन द ग्राफिक सिस्टम। नीचे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। Closed graph is supposed to deallocate all memory allocated by the graphic system. So over the time, when you're using that graph, basically, memory is allocated and graphics occupy a lot of memory. So that's the reason. Um, Deallocating memory is the job of closed graph, and so on. Shutting down the graphic system is the part of the closed graph. So deallocating memory, जैसे हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्टर है वहां पे डिस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर करो या ना करो ऑटोमेटिकली होता है। व्हाट इज द जॉब ऑफ द डिस्ट्रक्टर? डीअलोकेटिंग मेमोरी। इनविजिबली अवेलेबल है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि इनविजिबली अवेलेबल नहीं है, हमको डालना पड़ता है। ओके, वहां पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए एंड आपके स्क्रीन जो भी आपका एग्जीक्यूशन है उसके लिए मेमोरी को अलोकेट करते हैं और डीअलोकेट करते हैं, इवन इफ यू डोंट पुट इट ऑन योर ओन इन मैनुअल मैनर। जस्ट यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़ा सा अलग है, हमको ये मैन्युअली डालना पड़ता है क्योंकि ग्राफिक्स इज नॉट समथिंग दैट इज यूज्ड ऑन डेली बेसिस। सो दैट इज समथिंग which is different from that particular part. So that are your main functions जो है close graph and init graph, ये जरूरी है। Apart from that there are many more functions right here. Okay, so we'll be going one by one and seeing what these functions are. लाइन जैसे दिया है, इट्स सपोज टू ड्रॉ लाइन, ये बहुत काम आने वाले हैं आपको। मैंने एक प्रोग्राम भी है हमारा, स्टूडेंट्स एंजॉय दैट पार्ट बट कांट रियली हेल्प इट, आपका वो होने नहीं वाला है। So ये जो सारे functions हैं that will help you all. I will give you all the explanation as we go ahead and what this part is.
So circle is supposed to draw a rectangle and so on. Get mat sets and get mats y are also going to be used. So these are certain things that we'll be using. So one by one, the main functions have been explained. So now we'll start with our part of practicals. Okay. So ये है हमारा practical 1A. So we will keep this program in front of us and we'll just go to our Turbo C and try to begin the stuff out. Okay. So going to it. So the very first statement that we always have is basically your hash include. So I will just begin from that very part. एक हम फ्रेम करके रखेंगे hash include. So the new part that comes in is hash include graphics.h. उसके बाद आएगा आपका void main ब्रैकेट ओपन क्लोज उसके अंदर हम जाएंगे एंड हमारा जो int gd इक्वल टू डिटेक्ट आई टोल्ड यू ऑल वाई एंड gm ऐसा डिक्लेयर करेंगे देन वी गो टू समथिंग कॉल्ड एज init ग्राफ उसके अंदर हम एड्रेस पास करते हैं उन दो वेरिएबल्स का gm कॉमा path. I'm sure I'm going to get an error at this, but yeah, just let's see how it goes. Okay, so this is my part, and now I'm just going to write close graph. I know the first function is of arc जैसे मैंने आपको दिखाया है, but पहले program का structure जो है मुझे approve करना जरूरी है, so that's what I'm seeing. So I'm just going to save this program. It's a C program, so it will be something. Okay, it's bin. So prac, I'll write arc dot c. So arc dot c. So that's the link basically turbo c3 slash bin. Okay. Okay. Just a minute. ये और लिखा हुआ था. Just I'm copying the link from here just because I don't want to make any mistakes. Okay. ये जो पाथ है वो आपके कंप्यूटर में आपको जाके देखनी है. ये जो एप्लीकेशन मैंने यूज किया है इट्स बेटर दैट बिकॉज यहाँ पर डेडिकेटेड अलग से लिंक है तो वो उन्होंने प्रोग्राम में देखे रखा है कौन सी लिंक है वो आप डायरेक्टली ले सकते हो. मुझे ये लिंक डायरेक्टली मिली है. अगर आप आई विल शो इट टू यू ऑल वेयर यू आर सपोज टू गेट इट बट यस this guy had written this program and it is told that you take the same link basically. So we are supposed to take the same link turbo c3 slash slash bgi. So we will be taking the same link. ओके सो सेम टू सेम लिंक लिख लो. और अगर आप कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करते हो टर्बो सी का देन आई विल लेट यू ऑल नो वेयर विल यू ऑल गेट इट.
जब भी अगर अगर आप कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करते हो एंड आपके पास कोई सपोज विंडोज 7 नहीं है, और इफ यू आर नॉट यूजिंग द वर्जन दैट आई विल गिव इट टू ऑल, देन इन दैट केस आप लोकल डिस्क सी में आओगे और यहाँ पे एक फोल्डर है टर्बो सी प्लस प्लस, ये उसके साथ ही इंस्टॉल हुआ है। बट इस बंदे ने क्या सेटिंग किया है, ही स्पेशली मॉडिफाइड टर्बो सी फॉर विंडोज 7 एंड विंडोज 10 बिकॉज इट डजंट डायरेक्टली वर्क। अगर आप भी नोटिस करोगे, हम जब भी हम विंडोज 7 यूज करते थे हमारे कॉलेजेस में, तो वहां पे हमको पहले डॉस बॉक्स चालू करना पड़ता था और उसके ऊपर बाद में हम वो टर्बो सी रन करते थे, राइट। तो मुझे वो डबल वर्क नहीं चाहिए था, तो मुझे एक ऐसा कोई मिला इंटरनेट के ऊपर जिसने स्पेशल बना के रखा था, तो आई जस्ट पिक दैट वर्जन फ्रॉम हिम। अदरवाइज अगर हम डॉस बॉक्स भी यूज करते हैं तो ये सेम लिंक जाता है, दैट इज लोकल डिस्क टर्बो C3, और इसके अंदर ही यहीं पे BGI करके फोल्डर होगा, उस उतना ही लिंक देना है। मेरे मेरे पास यहाँ पे अलग से है, इस बंदे ने डिस्क में दिया है और डिस्क में इसने टर्बो C3 फोल्डर रखा है, और यहाँ पर आप देखोगे ही हैज पुट दिस फोल्डर कॉल्ड एज BGI, बिन भी यहाँ पर है और BGI भी यहाँ पर है। तो ऐसे नहीं क्या, सो उसने डायरेक्टली इस डिस्क के ऊपर सेट करके रखा है, सो वो डायरेक्टली डिस्क का पार्ट जो है अंदर वो देना पड़ता है चालू करने वाला पड़ने वाला है। ओके फाइन। Okay, the very first part that we have is of a arc. Okay, the very first part that we have is of a arc. I guess we are not going to begin now. We'll be beginning continuing in the next lecture. But पहले आपको concepts बता दूं. Okay, मैंने आज तक आपको एक चीज कही है कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग। हमारा ग्राफ इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा जो ग्राफ मोड हम कहते हैं, जो कैनवास हम कहते हैं, is nothing but our coordinate system. So a graph is equal to a graph mode is equal to our coordinate system of maths. So this is clear कि ग्राफ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आज तक मैंने आपको यही बताया है कि हमारा स्क्रीन भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेने वाले हैं। यस ट्रू, बट विद अ ट्विस्ट। बट विद अ ट्विस्ट, व्हाट इज द ट्विस्ट? सो हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसी होती है मैथ्स में आपको बता दो, ये कुछ ऐसी होती है। ये हुआ रहा हमारा x, ये हुआ हमारा y, और इसमें भी मैंने आपको बताया था हम सिर्फ पॉजिटिव स्पेस तो दोगे। व्हाट इज पॉजिटिव स्पेस? यहाँ पे दोनों प्लस प्लस आते हैं x एंड y, यहाँ पे x इज प्लस एंड y इज माइनस, एंड फिर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ पर आई गेस सॉरी यहाँ पर नीचे माइनस माइनस है। यस, यहाँ पे x इज माइनस एंड y इज प्लस, और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस होते हैं। सो व्हाट इज पॉजिटिव स्पेस? दिस इज अ पॉजिटिव स्पेस, हम इस पॉजिटिव स्पेस के ऊपर काम करने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर। सो इवेंचुअली हमारा जो x एंड y एक्सिस होता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ स्क्रीन मेनली x एंड y। सो ये हुआ हमारा x एंड ये हुआ हमारा y, राइट। ये मैंने आपको आज तक बताया। ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन के लिए, जब भी हम हमारे सम्स करते हैं उसके लिए ऐसा, बट हमारे कंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं। हमारे कंप्यूटर के लिए विद अ ट्विस्ट, दैट इज ये जो हमारा सिस्टम है वो इट इज गोइंग टू बी इनवर्टेड। इट इज गोइंग टू बी इनवर्टेड। व्हाट इज इनवर्टेड? इनवर्टेड का टेक्निकल मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग होता है इनवर्ट होना, उल्टा होना, या फिर कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन। सो यस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे? ऐसे ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस, पर ये वाई एक्सिस इस बार पॉजिटिव होगी, ओके, और ये भी पॉजिटिव होगा। वी आर जस्ट इन्वर्टिंग इट, वी आर जस्ट इन्वर्टिंग ऑन इट, या फिर हम उसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन ले रहे हमारी एक्सिस का, ऐसे बोलेंगे। ये ऐसा क्यों? ये हमारी स्क्रीन है, दिस इज सेट टू बी द 0 0 ऑफ द स्क्रीन, ओके, एंड दिस ऑफ कोर्स is x axis and this is y axis. So we are just inverting it. ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो। तो कैलकुलेशन के लिए अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ के लिए अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे हैव एक फ्लेक्सिबिलिटी ली जाती है कोडिंग में या फिर स्क्रीन के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए चीजें, एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू इंप्लीमेंट। सो कुछ ध्यान मत रखो, जस्ट इसको 0 0 कंसिडर करो एंड फिर यहाँ पर एक्स एंड वाई वैल्यूज के साथ खेलते जाओ। जस्ट क्लियरली पॉजिटिव साइड है
कुछ दूसरा कुछ याद ही मत रखो, दूसरा कुछ याद ही मत रखो, पॉजिटिव साइड में ये एक्स एन इसको वाई कंसिडर कर लो, एंड यहाँ पे वैल्यूज लिख लो 10 20 30 ऐसे, एंड यहाँ पर भी आई विल शो इट टू यू ऑल हाउ, and we will go ahead with that part. So this is something, so practical के लिए हम ये use करेंगे basic functions. So yes, one of the basic functions is the arc function. So let's go ahead and see how we can implement this arc function. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि arc function होता क्या है, उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी सबसे पहला जो सॉरी जो ये है, that is nothing but the arc function as given. Okay, so this is your arc function mainly. So arc draws a circular arc in current drawing color. Now arc का जो कुछ फंक्शन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है. First values are int x, int y, int start angle, int end angle, and int radius. Okay, so now I will just write this right here. So arc is a function, इसके अंदर हमको कुछ वैल्यूज देनी है, दैट इज योर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू सबसे पहले देंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद देंगे स्टार्ट एंगल की वैल्यू, उसके बाद देंगे एंड एंगल की वैल्यू, और उसके बाद हम देंगे उसके रेडियस की वैल्यू. Why all these values basically? I will tell you all why all these values. Simple. Arc है, right? Suppose ये हमारी स्क्रीन है, we know this is the screen, and this are according to this particular screen, this is supposed to be our x-axis and this is supposed to be our y-axis. This is our 0,0 point as we have discussed it. शायद उल्टा भी हो सकता है, it completely depends on the manufacturer, so I don't guarantee you this that ऐसा ही है. मैंने एक पीसी देखा है जहाँ पे उल्टा भी कॉन्फ़िगरेशन था, बट जितना मुझे पता है हमारे जो कॉलेज की पीसीज है वहां पे ऐसा चलता है. ओके, सो यू कैन ट्राई इट एट योर प्लेस दैट आपके पीसीज पे क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल हैव टू चूज योर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से. सो इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मैन्युफैक्चरर, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड है ऐसा नहीं है, शायद उल्टा भी नॉर्मल वे भी हो सकता है. दैट इज दिस फॉर्मेट इज आल्सो समटाइम्स अलाउड फॉर एक्स एंड वाई. So that is how it is. So the first is x and y. So अगर हम कहते हैं 0,0, so यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज नोट डाउन करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 and 80, and the same goes over here, 10 20 30 40 50 and 60. Okay, so this is going to be our value part. Okay, कुछ ऐसी रहेगी हमारी स्क्रीन. लेट्स अज्यूम दिस. नाउ इन दिस पार्ट बेसिकली सबसे पहले हमको आर्क फंक्शन कहता है हमको एक्स एंड वाई वैल्यूज देनी है, हमको एक्स एंड वाई वैल्यूज देनी है. दिस इज द एक्स एंड वाई वैल्यूज, राइट? सो एक्स एंड वाई वैल्यूज की जब भी हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमको एक पॉइंट लेना है. चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 40 कंसिडर करते हैं एंड वाई एक्सिस पे 30 कंसिडर करते हैं, तो हमारे एक्स एंड वाई पॉइंट्स कुछ यहाँ पर आएंगे. ओके, सो ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट. अभी जब हम आर्क की बात करते हैं, आर्क इज लाइक सर्कल. एक सेंटर पॉइंट जैसे सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट होता है, बाद में उसका कुछ रेडियस होता है, एंड बाद में वहां पे उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल निकाला जाता है. सो आर्क इज अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सो आर्क हम कैसे निकालेंगे वो पहले देखो. हमको एक सेंटर पॉइंट देना है. आप ज्योमेट्री में भी जाओगे तो आपको पहले बोला जाता है कि सेंटर पॉइंट आपको कंसिडर करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो वैसे ही हमको कुछ एक्स एंड वाई सेंटर पॉइंट देना है, जो भी कंसिडर करना है कर लो. इस केस में हमने 40,30 किया है. इस केस में हमने 40,30 जो है वो किया है. दिस इज योर 40 एंड दिस इज योर 30 राइट हियर. सो 40,30 इज सपोज टू बी योर एक्स एंड वाई पॉइंट. 40,30 विल बी योर एक्स एंड वाई पॉइंट. उसके बाद उन्होंने कहा है स्टार्ट एंगल, एंड एंगल एंड रेडियस. व्हाट डज दिस मीन? सो व्हेन वी टॉक अबाउट आफ्टर वी गेट द सेंटर पॉइंट,
फर्स्ट हम एक रेडियस देंगे, सपोज मैंने कहा आपका r इज इक्वल टू 10, राइट? तो फिर r इज इक्वल टू 10 के हिसाब से, मतलब r इज इक्वल टू 10 क्या, r इज रेडियस, मतलब इस पॉइंट से दूरी कितनी बनाएगा वो, इस पॉइंट से दूरी कितनी बनाएगा, अब दिस इज माय पॉइंट, इससे कितना दूर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ये 10 है तो ये 10, अगर मैं बोलूं 20 है तो शायद इतना दूर, राइट? सो इस पॉइंट से दूरी कितनी होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट रेडियस। ओके, सो रेडियस इज गोइंग टू टेल यू वेयर टू ड्रॉ दैट, at how much of distance from that center point, at how much of distance from that center point to draw the arc, that is what that radius is going to tell you. So radius will tell me that, so okay चलो इस ये अगर आपका पॉइंट है तो इस दूरी पे आपको आर्क बनाना है। Okay, now comes the part of start angle and end angle. What is start angle and end angle? आपका सर्कल कैसे होता है, कुछ मुझे अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है, इट बिगिंस फ्रॉम जीरो। ओके, एंड यहाँ पर आपका आता है 180, एंड बाद में जब भी वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं 360। सो ये होता है आपका सर्कल का एंगल, 0 to 90, 90 to 180, 180 टू बीच में कुछ आता है जो मुझे पता नहीं है, वन बाद में 180 to 360। सो आपको स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल मेंशन करना है। व्हाट इज द स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल? सपोज आपको अगर मैंने अगर ऐसा कंसिडर किया, दिस बिगिंस, ओके, यहां से चालू करके हम यहां पर ऐसे आएंगे, तो ये पहली वैल्यू मेरी 0 है और ये लास्ट वैल्यू होगी मेरी 360। सो इट इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ मेरा 90 डिग्री, ये हुआ मेरा 180 डिग्री, और दिस शुड बी माय नेक्स्ट वैल्यू, आई डोंट रिमेम्बर। सो 270. okay, 270, thank you for that. So 270 will be the value. So if I say I want to draw an arc starting from 0 up till 270, मतलब मेरा आर्क कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सिर्फ ये पार्ट छोड़ेगा। So if I mention my start angle as 0, then my arc will become something. This will be my 0 up till 270 he will go. If I say I want my arc just as starting from 30 degree, 30 degree कुछ यहाँ पर आएगा, right? And I wanted to go up till somewhere around 170 degree. So मेरा आर्क कहाँ कैसे बनेगा, कुछ ये मेरा सेंटर है, अगर ये मेरा सेंटर है तो यहाँ से कुछ चालू होगा and it will go up till right up till your like 170. Okay, and if I say I want my arc starting from 180 degree to 270, then it will be something like this, कुछ ऐसा बनेगा। So this is nothing but your start and end angle. It is from the respective up to the circle. Remember circle का जो angle होता है वो 0 to 360 के बीच में होता है। Yes, there is clockwise and anti-clockwise जो हम ऑब्जर्व करेंगे, हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है चूज करने का। अगर हम एंड्रॉइड या एचटीएमएल में जाते हैं वहां पे ऑप्शन रहता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चूज कर सकते हैं HTML5 में, जहां पे कैनवास यूज किया जाता है। सो वहां पे ऑप्शन रहता है, बट यहाँ पर सी में ऑप्शन नहीं है, जो है उसमें चलाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम सिर्फ स्टार्ट एंड एंड एंगल के साथ खेलेंगे। हम देखते हैं कि हमारा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वैल्यूज डालेंगे कभी अपने आप पता चल जाएगा। सो रिमेंबर वन थिंग, जो भी है आपको सेंटर पॉइंट देना एक्स एंड वाई, उसके रिस्पेक्टिव वो रेडियस लेगा, जो भी है आप मेंशन करोगे रेडियस 10 20 जो 30 40 व्हाटएवर, उसके हिसाब से वो रेडियस लेगा, और उतने डिस्टेंस पे वो स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल जो आप दोगे उसके हिसाब से वो ड्रॉ करेगा। So this is the values. I hope the concept of arc is very clear. Now let's go and implement this into our screens. तो ये फंक्शन याद रखो, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज दी है, देखो 0 to 135 उन्होंने एंगल लिया है, ये हमारा एक्स एंड वाई हुआ। This is your start angle, that is 0. 135 is your end angle and 50 is the radius. We will play with almost the same values and see just for information, just उसका आउटपुट कैसा आता है देखो, देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आता है। I guess then they begin 0 from where? God knows. This begin 0 from here. No, sorry. Say they begin 0 from here. Okay. यहाँ से वो 0 को begin करते हैं। कहाँ से? I don't know. Where will I find a pen? Okay, I find a pen. No. Okay. So yeah, this is the place where they are supposed to begin with 0 and they go up till 135. So इस direction में जाते हैं हम।
So I guess this is the anti-clockwise direction. They're using the anti-clockwise direction. So okay, let's see what it is. And हमारा जो ये नया वाला टर्बो सी है वहां पे कैसा है वो हम देखते हैं. So I get back. We had return arc. So here it is. I will just compile this once. It has zero errors. So cool. So ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है. ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है और आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल कि जब भी अगर प्रैक्टिकल जब भी करना है आप ये बेसिक प्रोग्राम कहीं पे सेव करके रखो इस फाइल में एंड देन यू जस्ट गो ऑन अपडेट इन इट क्योंकि ये भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके तो ये बाय हार्ट रखने का एंड बाद में बाकी का जो पार्ट है पहले भी कहाँ कहीं पर भी जाओगे कभी कभी एग्जाम के प्रैक्टिकल में दो प्रोग्राम्स होते हैं तो पहले ये जो कहीं पर आप लिख के रखो एंड उसके अंदर आप प्रोग्राम को अपडेट करके जाओ क्योंकि कुछ प्रोग्राम सिंपल आएंगे कुछ प्रोग्राम्स एक प्रोग्राम नॉर्मली सिंपल होता है एक प्रोग्राम डिफिकल्ट होता है. यस वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई एम टेलिंग यू अगर ऐसा सिचुएशन आ गया अभी तो सब कुछ चालू करने लगे लोग सो ऐसा सिचुएशन आ गया कि अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़े देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आई वोंट बी देयर सो बी प्रिपेयर्ड. As I told you all, I'm on leave, so I can't really help it. So शायद कोई और होगा आपके लिए उस वक्त. But फिलहाल तो ऐसा assumption है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ही होगा. But फिर भी just for information. So arc is a function. Arc का function कहाँ पे ग्राफिक्स लाइब्रेरी में है उसके बारे में सोचो मत. इनबिल्ट फंक्शन है. सो सबसे पहले हमको वैल्यूज देनी है हमारे एक्स एंड वाई की. चलो कुछ दे देते हैं एक्स एंड वाई के ऊपर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है बट लेट्स गो 100 120. 100 120. उसके बाद हमको स्टार्ट एंगल देना है. स्टार्ट एंगल चलो हम 10 दे देते हैं. उसके बाद हम एंड एंगल देते हैं. एंड एंगल उन्होंने 130 मेंशन किया था. वी विल गो फॉर समवेयर अराउंड लेट्स गो फॉर 180. उसके बाद रेडियस लेट्स टेक इट टू बी 20 और 30. चलो 30 ले लेते हैं. Okay, this is what is I've written and semicolon of course is mandatory without space. So that is the function which is there. Now let's compile this. Concept तो clear होना चाहिए आपका कि you know x and y q radius क्या है and angle क्या है start and end angle. So that should be clear and this it says no error. So cool. Let's see if this works. No, this is not working. Why isn't this working? Just give me a minute. Yes, we got the output.
Yeah, so here it I go again and run this for you. So this is the output that we have got. मैंने 0 to 180 डिग्री का एंगल दिया था. अभी मुझे देखना है कि मेरे प्रोग्राम में क्यों रन नहीं हो रहा है. सो आई विल जस्ट डू एन ओपन दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ डाला नहीं है यहाँ पे. शायद आपको भी ये प्रॉब्लम आ जाए. हमने यहाँ पे dos.h नहीं डाला था. I told you this is a different environment that I'm using, क्योंकि मेरे पीसी में डायरेक्टली सारी चीजें वर्क नहीं हो रही है. सो so we will try it. And I'm sure majority of you all are also going to face the same problem. So be prepared. यही फाइल यूज कर लो. And then we'll go ahead. Okay. Just close graph. क्लोज ग्राफ गेट सी एच के बाद डालना, नहीं तो पहले ही क्लोज हो जाएगा एंड पता नहीं चलेगा. सो बेटर पुट इट आफ्टर गेट सी एच. Alt R. Here it comes. Okay, so dos.h is also mandatory for this version. दूसरे वर्जन आपके जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉस बॉट्स यूज करने वाले हो टू सेटअप, आपको डॉस.h की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, ये मेरा डायरेक्टली चालू होता है. अगर आपने देखा है, मैंने डॉस बॉट्स के अंदर जाते हम माउंट सी वगैरह और कमांड्स कुछ नहीं डालते, डायरेक्टली वर्क्स. सो जस्ट वन एडिशनल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर अस, दैट इज dos.h. अभी let's play with the values a bit. Let's play with the values. Abhi, I will just increase the values over here. I'll go to 300 right here and I will go to 400 right here. देखते changes क्या आते हैं. आपको पता चलेगा कि दूर जा रहे हैं हम लोग. यहाँ पे हम 30 डालते हैं स्टार्ट एंगल और एंड एंगल लेट्स पुट इट टू बी समवेयर अराउंड 250. एंड रेडियस भी बढ़ा देते हैं. चलो रेडियस बढ़ा देते हैं टू 80. ओके चलो 70. So let's go and run this. सी दिस बहुत दूर आया है. और नीचे चले गए हम दोनों तरीके से. 300, 400 जब भी मैंने बोला उसके हिसाब से वी आर गोइंग मोर डाउन मोर अहेड. हमने वैल्यूज बढ़ा दी एक्स एंड वाई की, so उतना दूर वो जाता जाता है. एक्स की वैल्यूज रेक्टेंगल है, हमारा स्क्रीन जो होती है रेक्टेंगल है, तो एक्स जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है. एक्स का रेजोल्यूशन क्या होता है, इट्स ऑलमोस्ट आई गेस हमारे मॉनिटर्स के ऊपर जो रेजोल्यूशन रहता है उसके हिसाब से अगर हम देखे थे तो इट गोज टू 1200 और समथिंग लाइक दैट. एंड वाई का जो होता रहता है मैक्सिमम कहीं समवेयर अराउंड 900 रहता है फॉर मॉनिटर्स. लैपटॉप्स के लिए हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये है. स्टार्ट एंगल और एंड एंगल भी देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है. तो वी बिगिन फ्रॉम जीरो. मैंने 30 से स्टार्ट किया एंड आई वेंट अप टिल समवेयर आई गेस 250 और समथिंग. सो this is how your arc is formed, and I hope the concept is very much clear about the arc. This is the very first part about this. So this is it. So ये जो आपका है, ये याद रखना, जो आपको लिंक डालना है, आपकी जो लिंक होगी वो डालो. अगर सपोज ये वाला आप वर्जन यूज करोगे, डायरेक्ट वर्जन जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे डिस्क के अंदर जो पाथ है वो आप सी ड्राइव के आगे डालने वाले हो. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सेम. डोंट फॉरगेट टू यूज dos.h. डोंट फॉरगेट टू यूज dos.h. एंड क्लोज ग्राफ को गेट सी एच के बाद में लिखना, नहीं तो आउटपुट आके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा. So that is the part which is there. You all have to remember. So this is your basic way of writing a program. So इतना पार्ट आपका बेसिक होगा. अंदर आप यहाँ पे फंक्शंस जो है वो चेंज करेंगे. So हमको हमारा पहला पार्ट है ड्राइंग आर्क, दैट इज डन. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट. We'll close this. Reason to close this is basically हर बार चालू करना पड़ता है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम.
That problem can be avoided. Okay. Now the next function that we have is basically our बेसिक फंक्शंस लिखने हैं. तो बेसिक फंक्शंस में और जो हमारी लिस्ट है, दैट आई विल शो इट टू यू ऑल, 1h एंड सो ऑन. इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो 1a हमने कर दिया, उसके बाद आता है आपका 1b. 1b में हम एक पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज द वन पार्ट. देन 1d है, उसमें हम एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं. एंड वन ओके, polygon, circle, this is somewhere that we have to draw. Okay, majority is of circle drawing and so on. So basic shapes में तो inbuilt functions, let's go and check it. Inbuilt functions में हमारे पास कुछ next वाला जो आता है, that is line. Okay, so first let's draw the line. तो लाइन के लिए उन्होंने देखो क्या किया है. लाइन इज सपोज टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स. सो हम पहला पॉइंट देंगे x1 एंड y1 और दूसरा पॉइंट देंगे x2 एंड y2. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आर दिस प्रेजेंटेशन पार्ट. अगर हम कहते हैं लाइन, तो लाइन के लिए पहला पॉइंट हमको लेना है. सो सपोज ये मेरा जो ग्राफ है वो छोटा है, बट इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा. So if we take somewhere around 50 comma 20, this will be the part, and then we can go to last point, that is यहाँ पर sorry 20 comma 50, and then we can go to somewhere around 70 comma 10. So ऐसी line draw करके आएगी. So हमको ये first point देना है और हमको ये last point देना है. Okay, first point and last point. So this is what matters. So we'll get back to our part, that is turbo C again. टर्बो सी में आने के बाद आपका जो आई एम गोइंग टू यूज द सेम प्रोग्राम, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मुझे वापस नहीं लिखना है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट दिस. सो आर्क इज राइट हियर विद इन फ्रंट ऑफ अस. सो यहाँ पर हम इस फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं एंड लेट्स लाइक लाइन फंक्शन. हमको स्टार्ट एंड एंड पॉइंट देना है, तो आई विल जस्ट गिव द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट. वैल्यूज दे दो डायरेक्टली x1 एंड y1 की. So अगर मेरा कैनवास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 एंड इट गोज क्वाइट लॉन्ग एज यू ऑल नोटिस, सो हम लिख देते हैं, आई विल जस्ट पुट 70 20 on my x and y axis. Then my end point shall be, I will go a little bit far, that is somewhere around 400 comma, let's go for 300. Okay, and now let's go and see how this works. You see this, मेरा स्टार्ट पॉइंट कहीं पे मैंने यहां पर दिया था ऑन द टॉप, एंड देन माय लास्ट पॉइंट. सो दैट इज हाउ द लाइन इज फॉर्म्ड. Just for better understanding, I will show you all. Okay, I will show you all. That was system hanging part. It's turbo C at the end of the day. So ऐसी होगी आपकी line form. So यहाँ पर inbuilt functions, the initial practicals, inbuilt functions really matter. Okay, so this is how this line part is supposed to work. Then let's see the circle part. Circle में क्या है मैं आपको बता दूं. सर्कल का जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन तो लिख दिया ये, अभी उसके अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, तीन वैल्यूज आएंगी. वन इज योर एक्स एंड वाई वैल्यू, वन विल बी योर एक्स कॉमा वाई वैल्यू, दैट इज जो पॉइंट, एंड उसके बाद हमारा आएगा रेडियस. यहाँ पे एंगल देने की जरूरत नहीं है हमको. आधा सर्कल, सर्कल तो पूरा होता है, आधा तभी नहीं होता है, तो हाफ सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, बट दैट इज आई विल इक्लिप्स में वो पार्ट पॉसिबल है. We will see that in the eclipse part, so that will keep it for later. First the basic functions, let's finish them off. So this is your x and y part. So x and y का point देंगे, तो x and y, चलो I'll take something, I'll take 100 comma 120 at this moment. And radius ले लेते हैं, कितना चाहिए, चलो 50 ले लेते हैं. Okay, so and then we go and run this. This is the circle. So center point उसने कुछ लिया and 50 का radius लिया. So this is how basically it looks. Now one more part that I would want to show you to you all, that is एक function है जो बहुत matter करता है.
ये तो हमको पता चला हम रैंडमली वैल्यूज ले रहे हैं, दैट इज एक्स एंड वाई की 100, 100, 100, 120, 300, 400, एक्स एंड वाई की हम रैंडमली वैल्यूज लेते हैं। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है हमारी एक्स एक्सिस की साइज क्या है और हमारी वाई एक्सिस की साइज क्या है, पर मुझे अभी पता करना है कि मेरे पीसी के अंदर मेरे पीसी के अंदर मेरे मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस की साइज क्या है। okay, I want to find this basically. So where can I find this? So where can I basically find this? So ये मुझे x एक्सिस की मैक्सिमम साइज मुझे फाइंड आउट करनी है और मुझे ये y एक्सिस की साइज जो है वो मैक्सिमम मुझे फाइंड आउट करनी है मेरे पीसी के अंदर। सो उसके लिए भी उन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं and we will use those functions and see, and what are those functions I will show it over here to you all. Eclipse हम बाद में देखते हैं। Yes, we can even draw the rectangle. Rectangle आपको बताना पड़ेगा। Okay. Get max x and get max y. Get max x. See clearly written. I can't highlight it. It is specifically returns the maximum x and y coordinates of the string. देखो मैंने जैसे कि बोला मॉनिटर अलग है, साइज अलग होती है, मोबाइल का भी कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, तो हर स्क्रीन की साइज अलग होती है, हर स्क्रीन के ऊपर क्या कितने पिक्सल्स है वो अलग होते हैं। तो वो अगर हमको चाहिए एक्स एंड वाई कितनी साइज क्या है, वो हमको ये दो फंक्शंस देने वाले हैं। दिस इज द फंक्शंस दैट आर गोइंग टू हेल्प अस to get this values. So how do we find this values? How do we find this values? Let's go and have a look. uh, so get max x returns, this is the second part of it, get max x maximum x string coordinates and get max y maximum y string coordinates. So these two functions are supposed to return the maximum size of x and y axis respective of your monitor. So अभी इनको कैसे यूज करेंगे, ये इनबिल्ट फंक्शंस है अगर आप नोटिस करोगे, दिस आर इनबिल्ट फंक्शंस. So let's go for it and see if we can do it for us. So I go back to my turbo C. सो हियर आई कम, अभी मुझे वो पार्ट चाहिए। सो ये वैल्यूज होने वाली है, तो ये वैल्यूज मुझे कहीं पे स्टोर करनी पड़ेंगी। सो आई विल जस्ट राइट आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई, ऐसे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। इन ग्राफ के नीचे आई विल राइट दिस, दैट इज एक्स इज इक्वल टू get max x. I told you all it is an inbuilt function, so इसका हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। and get max y. सो ये फंक्शन वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड वैल्यू स्टोर होंगी एक्स एंड वाई के अंदर। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज सपोज टू प्रिंट एफ। Okay, so let's go and compile this. Okay, it comes to -16. Why so? Okay, just मुझे just give me a moment.
God knows it's not giving me the values that are expected actually. But get max is supposed to give you all the values which are like so this is gone. Okay. I guess with the this two functions can be directly used in graphics mode itself. The reason is किसी ने भी यहाँ पर डिस्प्ले करके उसको कभी भी दिखाया नहीं गया है एंड शायद मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो आई कैन जस्ट ट्राई वन थिंग दैट इज क्लोजिंग द ग्राफिक्स मोड एंड डूइंग इट सो लेट मी सी इफ दैट हैपेंस otherwise I don't have a solution to it at least at this moment with the limitations of C and C++. So ये था हमारा arc. So yeah, the function is gone already. Okay, fine. I will show it to you later. जब भी हम ये करेंगे तभी हम देखते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है. So just remember one thing that get max x and get max y are the two functions which are going to give us maximum screen sizes of x and y. Why are this required? I'm going to tell you all very soon why are this required to us and how important they are going to be in your future practicals. So this are going to be very much required. So अभी हम हमारे अगले फंक्शन की ओर जाते हैं that is हमारा जो पार्ट है. We are still not done with our rectangle. So rectangle is very important. अभी rectangle की जब हम बात करते हैं so यहाँ पर अगर आप rectangle का फंक्शन देखोगे it is supposed to draw a rectangle. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का फंक्शन एक ही है. ओके वो आपको मेजर करना है तो इट्स सपोज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. सो यहाँ पर क्या दिया है इट इज समथिंग लाइक आईएनटी लेफ्ट आईएनटी टॉप आईएनटी राइट एंड बॉटम. ये क्या है जरा आपको यहाँ पे बता दूं ये क्या है एग्जैक्टली. सो व्हेन आई से आई वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल सो मुझे सिर्फ यहाँ पे दो पॉइंट देने हैं. When I say I want to draw a rectangle, I have to just give 2 points. Now, which are these 2 points? They say left and top, and then they say bottom and right. What does this mean? Bottom and right. They are in a combination if you notice. So what does this exactly mean? Right and bottom actually, not bottom and right and bottom. So it's ulta, right and bottom. Okay, left is going to be your x value and y top is going to be your y value. Again, right is going to be your x value and bottom is going to be your y value. What is this? So दो पॉइंट देने हैं मुझे. ये एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ. 2 points. So when I talk about a rectangle, ये मेरी स्क्रीन है. स्क्रीन के ऊपर ये होगा मेरा x एक्सिस, ये होगा मेरा y एक्सिस. अभी मुझे टॉप का लेफ्ट टॉप देना है और मुझे अगर मैं कुछ ऐसे दो पॉइंट दे दूं he will draw a rectangle like this. So in each and every rectangle मुझे सिर्फ दो पॉइंट देने हैं. That is this top left point, left top या top left, and then bottom right point. Okay, so top left and bottom right. आप बोलोगे मैम मुझे ये दो पॉइंट ऐसे देने हैं ऐसे देंगे हम और बाद में आई वांट दिस टू जॉइंट लाइक दिस. नहीं ये नहीं होगा. ये दो पॉइंट अलाउड नहीं है. ये दो पॉइंट अलाउड नहीं है. आपको हमेशा रेक्टेंगल जब भी ड्रॉ करना है
इन दो पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है. दिस आर द टू पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड द मोस्ट. एंड इसके ऊपर से ही हम सारा कैलकुलेशन करेंगे. इसके ऊपर से ही हम सारा कैलकुलेशन हम करेंगे. सो मेक श्योर दी आपका पहला पॉइंट जो है वो टॉप लेफ्ट का हो एंड दूसरा पॉइंट जो है वो बॉटम राइट का होना मैंडेटरी है. बॉटम राइट का होना मैंडेटरी है. So that is how it's going to look. So let's get back and do these things. Okay, so here I go and I put something called as rectangle in that. So top left, I will just give, and then bottom. So bottom में मैंने कुछ calculate नहीं किया है, but जितना मेरी idea है उसके हिसाब से अगर मैं दूँ तो it will be yes. This is something that I've put, and let me see what output am I supposed to get. I get a rectangle. So that is how this is supposed to be. इस वक्त इन बेसिक फंक्शंस के साथ आपके लिए आप बोलोगे मैम पॉइंट्स आपने जैसे दिए बिना कैलकुलेट किए हम भी वैसे ही दे सकते हैं. यस, इफ इट्स अ सिंगल फंक्शन, यस, बट